Hi everyone, welcome back to another video. So guys, आज की वीडियो के लिए I'm really excited because I'm taking an interview of someone who's doing Bachelor of Nursing here in Australia. So guys, Australia में nursing is very popular along with IT and accounting. And I'm sure बहुत से लोग हैं जो nursing करना चाहते हैं, but उनके बहुत से doubts होते हैं, questions होते हैं, like PR मिलेगी या नहीं मिलेगी, how much you can earn, pay rates, all these kind of things. And इस interview में हमने ये सारी चीज़ें cover की हैं. So if you are someone who wants to pursue nursing in Australia, I'm sure this interview is going to be of great help. Now this interview is a little bit longer, it's over 30 minutes. So अगर आपके पास इतना time नहीं है and you want to listen to particular question, please do check the description. I will leave all the time codes there. And one last thing guys, if you have any particular question regarding this video or anything in general, please do let me know in the comment section. और अगर कोई भी ऐसी field है जिसके बारे में आप ज़्यादा जानना चाहते हो, please do let me know in the comment section and I'll try to find someone who can answer those questions. And yes, if you haven't subscribed to this channel, please do so because that motivates me to create more content like this. Thank you very much and let's start the video. Right guys, so as I promised ke मैंने बताया था आप लोगों के I will be calling someone who's doing nursing from Australia. And जब भी ऑस्ट्रेलिया का नाम आता है then nursing and IT is very, it's like it sells like hotcake. People come here for nursing and IT, accounting as well. तो मैंने आपको बोला था कि I will be calling someone who is doing nursing from Australia so that she can share her experience and she can tell के how it is to do nursing here, कितना expensive है, क्या fees है, क्या infrastructure है, colleges, all those sort of things. So I've got Charan here, and thank you very much, Pabiji. And let me tell you one thing, guys, that she is a mom of two and she's studying full time. She's doing jobs as well, and still she has given me some time to share her experience so that you guys can get some help from it. So thank you very much, Pabiji, for coming here and sharing your experience. It's okay, Suchit, anytime. Okay, so सबसे पहला क्वेश्चन तो भाभी जी मैं ये पूछूंगा आपसे कि when did you come to Australia and जब आप आए थे तो क्या करने आए थे, क्या स्टडी करने के लिए आए थे आप? मैं 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਆਈ ਮੈਂ ਨਰਸਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀ ਪਰ ਜਦ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਉਣੇ we don't know what is the actual picture when we reach here. So nursing is very expensive. I couldn't afford the fee, so I end up changing few courses. मैं ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਕਰੀ ਵਿੱਚ ਗਈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੁਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੇਂਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਐਂਡ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਡਿਪਲੋਮਾ ਆਫ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੀਤਾ, few little courses. ओके सो ये सारी चीजें तो मुझे भी नहीं पता थी, आज ही बात हो रही है कि इतनी सारी चीजें की हुई हैं. एंड जो भी कोर्सेज के नाम आपने लिए ना, दे आर वेरी फेमस. उस टाइम पे जैसा कि आपने बोला कि 2009-10 उस टाइम पे जैसे बेकरी वगैरह, कुकिंग, इट वाज वेरी फेमस, है ना. लोग बहुत ज्यादा स्विच करते थे, बहुत ज्यादा आते भी थे इस फील्ड में. हाँ जी, 2006-7 it was very easy to get PR in cookery, bakery, पर after 2009 they made it very hard to get PR in those courses. Alrighty, तो आप उस पे आए थे. तो गाइज एक और चीज ये है कि कई लोग पूछते हैं कि कैन दे चेंज देयर कोर्सेज. अभी तक ये ऑप्शन है, लाइक जैसा कि मैं बात कर रहा था कि जो आपके एजेंट्स हैं वो आपको ट्रू पिक्चर नहीं बताते. दे विल शो यू वेरी लाइक यूनिकॉर्न्स एंड स्टफ के लाइफ बहुत अच्छी है. एंड आप लोगों को भी लगता है उनकी बातें सुन के कि यस आप जाओगे, स्टडी करो एंड पीआर ले लो. बट जो रियल पिक्चर है, जो एक्चुअल स्टोरी है, इट इज वेरी डिफिकल्ट, very different what they portray. And like she said कि nursing was very expensive, so she couldn't afford it. She changed few courses, ठीक है, but उसके बाद भी it wasn't that easy. Okay, so nursing आपने छोड़ दी, फिर then like you said कि आपने different courses किए, and then how you ended up in doing this aged care course? Aged care course I did it in 2009. क्योंकि मेरे फ्रेंड्स मेरे तो पहले ਇੱਥੇ आए हुए सी, उन्होंने दसा it's very easy to find a job in aged care. Okay. So I came in July 2009 and September 2009 I did aged care and I'm working from that time. So it's been 11-12 years now. Okay, so since मतलब 11-12 साल हो गए आपको, मतलब you are still doing in that. So how do you find this job? Like जो एज केयर की जॉब है, that is very famous, especially जो हमारी इंडियन, I would not say Indian community because कई लोग थोड़े offend हो जाते हैं कि हमेशा इंडियंस ही बोलता है. I would say Asian community में बहुत ज्यादा है. That includes India, Pakistan, Sri Lankans, all these people, they do get into aged care. तो एक मेरा क्वेश्चन ये आता है कि जो एज केयर में जाना है, इज इट इजी? लाइक जैसे मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है एज केयर का, कैन आई डू लाइक एज केयर कोर्स इजीली?
हाँ, it's very easy. जब मैं आई सी ऑस्ट्रेलिया ਦੇ ਵਿੱਚ you have to study only for a month, but now it says 4 to 6 months. Okay. But if you are studying in nursing, 6 months ਦੀ study ਤੋਂ ਬਾਅਦ you can go in and work in aged care. You don't have to do any separate course for that. And what about money? Because चाहे हम accept करें या ना करें, money is always going to be a factor, है ना? हर कोई यहाँ पे हाँ. आता ही है, बोलता है कि yes they want to earn. So सुना है मैंने कि एज केयर में अच्छे पैसे हैं. Is it true? I think money is almost same in every job. It's all Okay. more about flexibility, not money. Okay. So जब मैं job start की थी, I started from $18. All right. Now Okay. my pay is $26 an hour. But now if you start working in aged care, you'll start from 24, 25 as well. Okay. It increases every year by 50 cents. Okay. लेकिन why Asian community does it? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ they go to the child care all the time. ਕਿ ਹਾਂਜੀ. ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰ look after ਕਰਨਾ, ਸਕੂਲ drop ਕਰਨਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ Yes, ਕਰਨੀਆਂ. yes, yes, So it's yes. more flexible. You can do work in the morning, you can work in the afternoon, or you can do a night shift. Okay, yes. So that's another thing, guys. And जो bachelors हैं, they probably will not understand, but yes, जो लोग married हैं, they will understand कि what she is talking. Yes. Because यहाँ पे यहाँ पे looking after your kids is a big challenge. You know, you don't have your family here. अगर एक मतलब एक partner अगर morning में कर रहा है, other one can work in the evening, so there's always someone to look after your kids. So उस चीज की flexibility यहाँ पे ज़्यादा चाहिए होती है rather than money. And जैसा she said कि yes, you know, that flexibility was there. That's why she's still doing that job. So okay, now like आपने बोला भाभी जी कि you know you already got experience of 11-12 years. So आपको I'm pretty sure कोई jobs की कमी नहीं होगी because you have got so much experience. कहीं पे भी आप जाओगे you will get jobs easily. तो अब क्यों आपने सोचा कि मैं nursing करूं? Why nursing at this time? I think it's more about you want to earn more. You're never satisfied what you want. I think that's my motive. I can earn a bit more money. So instead of working 5 days, maybe I can work 3 days and spend 4 days with my family. Okay. So it's just that. Okay. So मतलब nursing में ऐसा है कि if you work 3 days, you will still earn, you know, equal to 5 days of working with aged care. Is it that? Yes, that's true. Okay. So and even in aged care, my pay increases by 50 cents every year. okay. But in nursing, it increases almost 10% for the first few years. It starts from $32. First year Okay. is not like that much money, Okay. but then it will go up quickly. Okay. And that was my next question कि नर्सिंग का जब भी आता है तो यू नो स्पेशली जो भी लोग मतलब इंडिया मतलब ऑस्ट्रेलिया में जिन्होंने भी एज केयर कर रहे हैं या ऑलरेडी उसमें है, उनका अल्टीमेट गोल यही है कि हमने नर्सिंग करनी है. सो इज इट रियली ट्रू? मतलब जो इतना हाइप किया हुआ है, इतना ज्यादा एक्सपेंसिव है इसकी स्टडी, इज इट रियली वर्थ, इज इट रियली दैट गुड मनी इन दैट कोर्स? It is because it's not about hourly pay rate. क्योंकि Okay. ज्यादा आप आफ्टरनून शिफ्ट करते हो ਉਹਦਾ ਅਲਾਉਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਨਾਈਟ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਦਾ ਅਲਾਉਂਸ ਹੁੰਦਾ. When you work as a nurse, you work as an in charge nurse some of the times, then you get an in Okay. charge allowance on top of that. Okay. So it goes to even $50-$60 an hour as well. Okay. $50-$60 an hour. That is Yes. a really good amount of money. And like what sort of jobs or job responsibilities, because though you are not a nurse yet, but I'm sure कि because आपने काम किया हुआ है उस फील्ड में, you must have seen a lot of nurses who work around you. तो किस तरह की जॉब्स होती हैं, मतलब क्या क्या जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं जो नर्सिस की हैं? So अगर if I tell you about aged care ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਦੇਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ. And then overall ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨਸ ਕਰਨੀਆਂ. If there is any changes in their health, you must inform their families. Then Okay. you tell your PCS care worker what you meant to do with that patients. Okay. It's more about a little bit mentally stressful because patient residents बहुत ज़्यादा ਹੁੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ look after करना. Okay. But in hospitals it's good. You get only 4 patients per nurses. All So you have to look okay. after only those 4 patients during your shift. Okay. And you learn more in hospitals because then there are different patients coming every now and then in hospitals. They have Right. different health issues. Then you get more experience. And मतलब basically ये है कि जो workload है of a nurse is less as compared to aged care worker, yeah? Yes. And you get more pay as well. So that is cherry on the top, isn't it? Yes, I think pay is not much difference, but in hospital you have less chances. You get in charge shift allowances because there are a lot of nurses and
80% of nurses probably are more experienced than you. Yes, that's But in very aged true. care, you get money with these things, and at night time, it's like a lot of money for the nurses. So, like, what about work wise? मतलब being a nurse, जो काम करना है वो ज्यादा better है या जो as a aged care worker काम करना वो ज्यादा better है? मतलब क्या क्या work difference कैसा लगता है आपको apart from this thing कि चार ही patients हैं या ज्यादा patients हैं? I think everybody has a different preference, but मेरी preference है कि if I finish my study, I'll go to the hospital Okay. just to learn more experience. You deal with the different patients and different diseases, so you learn more. Aged care ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ mentally you have a lot of stress, but it's like you're looking after the same patients. You know your patients, so you're just yeah. giving them the medicines. If something happens, you just send them to the hospital. Okay. Then when patient comes in the hospital, you know the actual picture, what is happening with the patient. You like ECG and all those things, you don't get chance to do them in aged care. You In can aged only care. do them in hospital. In the hospitals, yes. And like एक job reputation का भी लगता है आपको कि if you are a nurse, people treat you in a better way, या if you're aged care worker, थोड़ा job reputation उसका भी थोड़ा आपको लगता है कि हाँ थोड़ा difference है? I think there is feel? no difference. It's only person's mentality, or maybe if I'm a nurse, I can think myself above than the carer working in aged care. So I think every person is different. There is no difference in that. Okay. मतलब जो लोग हैं, जो पेशेंट्स हैं या लोग आपसे बात करते हैं ना, मतलब they are, most of them are like they treat you guys kind of equal, that you are frontline workers, they treat you that way, not कि आप एज केयर में काम कर रहे हो, so you don't have that much, you will not get that No, much respect, but they अगर आप treat you nurse हो, equal. they treat you equally. That's one of my point. That's good. Okay, now we will come to your studies now. So which university you are doing your nursing? I'm studying from Vic University. Its Okay. campus is close to my home. It's in St. Albans. Okay, so Victoria University. हाँ जी. Okay. So एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में एक नेक्स्ट ये आता है अभी कि इतनी सारी यूनिवर्सिटीज हैं ऑस्ट्रेलिया वाइड, राइट? तो व्हाट डू यू थिंक कि जो यूनिवर्सिटीज हैं, डू दे मैटर? लाइक इंडिया में होता है कि ये रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी है तो इसी से कोर्स करना है तो ही मुझे जॉब मिलेगी, वो चीज है यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में? बिकॉज यू आर डूइंग नर्सिंग, तो स्पेसिफिकली मैं नर्सिंग के बारे में ही पूछता हूँ। तो नर्सिंग में अगर यू आर डूइंग इट फ्रॉम सम अदर यूनिवर्सिटी जो दूर है, या पार्ट टाइम कर रहे हो या फुल टाइम कर रहे हो, ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स मैटर? No, it doesn't really matter. जब मैं start की थी, I was told the same thing. No, you shouldn't study from this university. You should go for this university. It has a good repo and all that. But no, end of the day, only matters your degree. If you have a degree in your hand, you'll get a job. Okay. So is it specifically for nursing or some other fields as well? I think as long as you have a degree, you'll get it. But nursing is like you'll get the preferences, because medical field is everywhere safe. You'll get a job anytime, anywhere in the world, not only in Australia. नहीं, ये तो हाँ, ये चीज मैंने भी सुनी है कि नर्सिंग का, आई एम श्योर जो लोग देख रहे हैं उनको भी पता होगा कि नर्सिंग इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज एवरग्रीन फील्ड, बिकॉज यहाँ पे है ना नर्सिंग की बहुत ज्यादा डिमांड है। इवन आप चाहे ऑस्ट्रेलिया लगा लो, कनाडा लगा लो, नर्सिस के बारे में मैंने ऐसे सुना है कि यस, इफ यू आर कमिंग हियर फॉर नर्सिंग you will not regret it, है ना? Yes, it's only first 3 years are hard when you have to pay a lot of fees and manage your work and study life. But after that, it's all good. Okay, so that was my next question now. Okay, what's the fees like? So you are a citizen now, आपकी obviously fees कम है, but still I would like to know कि कितनी आपकी fees है, and if you know कि जो international students हैं जो आना चाहते हैं ऑस्ट्रेलिया में, तो उनकी फीस कितनी होगी, कितना डिफरेंस है फीस का? It's huge difference. So because I'm a domestic student, so I pay $4,000 per semester. So it's like $8,000 per year. Okay. But with international students, you have to pay $15,000 to $17,000 per semester. Per semester. All right, Per guys. semester. So एक बार मैं और बता दूं guys, just in case आपने miss कर दिया, she is saying that if you're a local student, like she's a citizen, so she is paying domestic fees. So that is $4,000 as compared to $15,000 for per semester. Like every 6 months you will be paying 4,000 versus 15,000. So that's I think it's very big. Close to 16 to 17,000, but 17. different universities can be. Yeah, and on top of that अगर आप expenses लगाओ, and I'm sure कि और भी बहुत expensive, like हाँ, ये चीज भी पूछना चाहूंगा कि जो ये फीस है,
is this like semester की फीस अगर हम लगाएं कि $15,000 जो semester की फीस है, is that all और उसके on top of that भी कुछ expenses होते हैं when you are in university? No, that's not only expenses because every year you pay like $600-700 for your using a library. You can't take any books at home, but you can take it from library. So it's the same for domestic and international students. There is no difference. Okay, so the only difference is of fees, Yes. which is a major difference. It can make a Yeah, lot if of you difference. check on end of the day, it's like $90,000. Oh my God. Oh my God. Okay, और अब मेरे दिमाग में एक और क्वेश्चन आया कि especially for international students, right? जो domestic हैं, I know they are paying very less fee, which is fine, right? But जो international students हैं, अब कोई student सोचे कि यार मैं $15,000 फीस दे रहा हूँ per semester, right? तो जैसा कि आपने बोला, at the end of your course it might be $80,000 or $90,000. So considering that much amount, is it worth doing nursing? And जब आप जॉब करने लगते हो, is it gonna pay it back? Like $90,000 is a massive amount. No, it will be worth of it. Okay. So okay. because if I did nursing in 2009 and 10, I think Yeah. I would be very well settled in my life. I'm settled now as well, but Yeah, it would be a yeah. different picture then. Okay. क्योंकि ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੀ $30-32 ਤੋਂ ਪਰ ਉਦੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ I would be $40 plus taking by now. At this time, okay. You'll get a lot of money, you'll make a lot of money. If you can afford the fees, you should go for it. Okay, so because see, मुझे कोई नर्सिंग का एक्सपीरियंस नहीं है एंड आपसे भी इतनी ज्यादा कभी नर्सिंग के बारे में बात नहीं हुई बिकॉज यू नो आई एम नॉट इनटू दैट फील्ड. बट जब भी मुझे कोई क्वेश्चन आता था किसी सब्सक्राइबर का, आई ऑलवेज यूज्ड टू टेल देम कि यार नर्सिंग करने आ जाओ, चाहे कितना भी लोन लेना पड़े आपको, whatever it is, if you are coming for nursing, you will pay it back soon. तो वो बात सच है. It's true because if you don't do nursing, you come for small courses, but it's hard to get a PR. So as I did, you'll be end up changing few courses. So end of the day, you're paying more than 50,000. Exactly. So it's worth spending a bit more, and then you can get it back. And don't forget कि it's not just money. जो आपने वो time waste करा है वो अलग है, plus जो stress That's है true. है ना, जो आपने छोटे मोटे कोर्सेज किए हैं उसके बाद भी ऐसे नहीं कि आपको पीआर मिल जाएगी, बट स्टिल यू हैव टू लुक सम अदर कोर्सेज जिसमें पीआर हो. सो इट्स बेटर कि आप पहली टाइम पे फर्स्ट अटेम्प्ट में आप ज्यादा स्पेंड कर दो, बट कम ऑन अ कोर्स जिसमें आपको पता हो कि पे भी अच्छी होगी, आपका फ्यूचर भी सेट हो जाएगा एंड यू नो यू विल गेट पीआर. That's true because मैं 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ and I think I got my temporary visa 2014. So it Okay. was like 6 years time and still it wasn't close to get permanent residency. Permanent It would take maybe residency. 3-4 years more, but then in between I got married. So yeah, that's another thing, guys. So yes, अगर आप लोग देख रहे हो, अगर आप सोच रहे हो कि यार बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है नर्सिंग करना, मैं किसी छोटे मोटे कोर्स में चले जाता हूँ, तो you heard her, you know, it's worth. If you are coming here on nursing, अगर आप सोच रहे हो, it is definitely worth. अगर आप लोन लेना है, कुछ भी करना है, whatever it is, but it will be worth after some time. You will be well settled. Alrighty, so इसके बाद अब एक क्वेश्चन मैं आपसे और पूछना चाहूंगा अभी, बिकॉज आपने इंडिया में भी स्टडी करी है, यहाँ पे भी करी है, सो यू कैन टेल बेटर के हाउ इज द स्टडीज लाइक. मतलब अगर हम कंपेयर करें वो इंडियन स्टडीज की जहाँ पे हमें पता है कि यू नो काइंड ऑफ रट्टाफिकेशन होती है, अगर हम उसके हिसाब से कंपेयर करें, हाउ आर स्टडीज हियर इन ऑस्ट्रेलिया, मतलब कैसा होता है, कैसा कल्चर है क्लासेस का, बिकॉज यू आर डूइंग फुल टाइम सो यू कैन एक्सप्लेन इट बेटर कि क्या कल्चर कैसा है स्टडीज का, कैसे असाइनमेंट्स हैं या जो एग्जाम्स होते हैं पास वगैरह होने का क्या सिस्टम है. ਹਾਂਜੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਇਸ ਮੋਰ ਅਬਾਊਟ ਕੇ ਰੱਟਾ ਲਗਾ ਲਓ, ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਹੋ ਰਹੇ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮ ਫਿਨਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਦੂਸਰਾ ਆ ਗਿਆ. So it's totally different in Australia. You have few exams, maybe so far, maybe in 6 months time you'll have 3 or 4 exams, that's it. It's more about making assignments and researching by yourself. So it's totally different than India. So, and it's easier than India too. Or okay, is it easier? Yes, easier than Indian study. Okay, I didn't know that because मैंने यहाँ पे कोई स्टडी करी नहीं है, बट मतलब जितने भी लोगों से मेरी बात हुई है, स्टूडेंट्स से जो फ्रेंड्स भी हैं, वो यही बोलते हैं कि यार इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट एंड हर कोई यही बोलता है कि मोर ऑफ असाइनमेंट्स है यहाँ पे, मोर ऑफ मतलब आपको वो नहीं देंगे कि 10 सब्जेक्ट आपने पढ़ने हैं एक सेमेस्टर में. इट्स लाइक 1 or 2 सब्जेक्ट पर मंथ, वही स्टडी करोगे आप, देन नेक्स्ट सब्जेक्ट. इट्स काइंड ऑफ दिस. इज इट राइट? ਹਾਂਜੀ दैट्स ट्रू ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਯੂ ਡੋਂਟ ਹੈਵ ਟਾਈਮ ਟੂ ਰਿਸਰਚ ਐਨੀਥਿੰਗ, ਤਾਂ ਰੱਟਾ ਹੀ ਮਾਰਦੇ ਰਹੋ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਰੱਟਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ. ਠੀਕ ਹੈ, ਸਹੀ ਹੈ. ਐਂਡ ਵਨ ਮੋਰ ਥਿੰਗ,
as ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ universities matter ਕਰਦੀਆਂ. हाँ जी, So I think if you come from India, it doesn't really matter for me because I got family. I have to manage with kids and job. हाँ जी, So Victoria University in Victoria is the only university that offer you block system. Block Okay. system means if a semester, one semester has 4 subjects, so you Okay. study only one subject at a time. So one Okay. month you'll study one subject, then you'll finish with it, then you'll start with the second one. But Okay. none of the other university does it. Okay. So वो options भी हैं, मतलब that's good. मतलब considering कि you can look at your circumstances कि आपको क्या चीज सूट कर रही है, उस हिसाब से different options भी हैं, which is good. एक next चीज अब आती है कि जैसे आपने study start करी, you are into your first semester, second semester. So कौन से सेमेस्टर या कौन से ईयर के बाद आपको वर्क एक्सपीरियंस मिलना स्टार्ट हो जाता है इन नर्सिंग? लाइक पहले थियोरेटिकल देन प्रैक्टिकल वर्क, मतलब प्रैक्टिकल वर्क कब kind of start होता है? And overall, you have to pay 800 hours of placements in 3 years' time. Okay. So nursing, the experience, we can't work as a nurse while we're studying nursing. Okay. But still, if you're looking for a job, once we finish our 6-month course, one semester is done, you do your first placements in aged care. So you can Okay. start working in aged care straight away. Okay. So अच्छा ऐसे है कि मतलब फर्स्ट सेमेस्टर आपने लगाया, obviously because you are not qualified nurse at that time, आपको 3 साल पढ़ना है, you cannot work as a nurse, it's quite understood. But that was my thing कि भी यार अगर बंदा सोचे कि यार मैं expenses बहुत ज्यादा, मैं कुछ करना चाहता हूँ साथ में, so after 6 months you can आपकी trainings कॉलेज की तरफ से ही होती है, वो mandatory trainings होती हैं? हाँ जी, वो कॉलेज की तरह, I think it's all included in your school fees, whatever you have paid, so they'll arrange your placements. Okay, they will arrange your placement. So Yes. आपको मतलब kind of experience हो जाएगा, थोड़ा on job training kind of, and after that अगर आप चाहो कि मैं काम भी करना चाहती हूँ, मैं work भी करना चाहती हूँ, so you can approach different जो age cares हैं, you can approach them कि yes, I have completed 6 months of this, I'm interested to work for casual or part time whatever, so you have that option कि you can work, is it? Yes, you have option, and 80% of the chances ਜਿਹੜੇ age care ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ placements ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ, हाँ जी. they observe how you working. So Okay. if you're keen to learn, you're a good worker and everything, they will hire you. Okay. So Okay. you can apply there while you're doing your placements. They'll let you know that once you finish your placements, you can come and start working. Working. Okay. So all right, जब आप placements कर रहे हो, मतलब in between your study हो आप nursing के, so what sort of pay do you get? Do you get less or same amount of pay जो normally एक aged care worker को मिलता है, वही pay मिलती है? किस तरह की? Same amount of pay. Okay, so that's a very good thing, guys. I want to stress on this thing कि अगर आप nursing करने आ रहे हो, after 6 months, like she said, कि आपको कहीं इधर-उधर job करने की जरूरत नहीं है. If you stick to aged care में interested हो करने में, then you have that option and you get equally paid. ऐसा नहीं है कि आपको कम salary मिलेगी. So, while studying, you can kind of offload your expenses, थोड़े बहुत जो expenses होते हैं. And I imagine कि same rule apply होता होगा भाभी जी कि you only get to work like 20 hours. Is it Yes, right? that's true. है ना, 20 hours you can work. हाँ जी, पर it's good option. You can work on weekends. We get weekend loading, so you get more pay, and you can work during night shifts. Night shift has some more pay, and then you study 4 months in a semester. Then you get 2 months off. 2 months off. It So comes in the term break or something. Yeah. Yeah. Then you can work full time during your break. Okay, that's good. So if you are, 4 महीने का अगर आपका semester है, after that you have full rights. You can work full time in those 2 months. So which is good. Like rather than, मतलब मेरा point ये है कि rather than आप कहीं और job देखो, it's better to work in the same field ताकि आपको experience हो. More importantly, आपके contacts बने, वहाँ पे आपकी repo बने, आप उनको पता लगे लोगों को कि yes, she or he is interested. And after completing your training, they might offer you a full-time job there, so which is a good thing. क्योंकि जब तुसी placements करते, you always have a buddy, so they'll always pass a comment for you that she's a really good worker. They'll make a reference for you to the managers, then it's easy to get a job. एक और क्वेश्चन मेरे दिमाग में अभी आया, ये मैंने लिखा तो नहीं था बट दिमाग में आया अभी कि नर्सिंग इज यूजुअली वी रिलेटेड टू गर्ल्स, तो व्हाट अबाउट बॉयज? अगर कोई इंडिया में है या यहाँ पे भी मैंने देखा, मुझे तो पता कि लोग करते हैं, बट आई एम श्योर जो लोग देख रहे हैं इंडिया में या कहीं पे भी देख रहे हैं, दे विल बी लाइक ये नर्सिंग तो सिर्फ लड़कियों के लिए है. Why should we watch this? Why should we consider? So please, can you explain कि ये कितनी रियलिटी है या कितना गलत है ये? हाँ जी, अपने इंडिया ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ
ਇਹ ਤਾਂ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਇਹ ਨਰਸਿੰਗ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੇਗਾ ਬਟ here if you are boy and do a nursing you'll be getting preference to get a job Oh, ਕਿਉਂਕਿ is ਉਹ it? ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੇਲ ਨਰਸਿਸ ਹੋਣ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮੇਲ ਨਰਸਿਸ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ I don't know ਕਿ in future PR ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕੇਗਾ Okay. ਪਰ they always prefer that male nurses should be here. Okay, and any specific reason for that कि क्यों मतलब They just want to promote it that why it's all Oh. about women. Okay. क्योंकि कहते हैं nurse should be a girl. Why nurse should be a girl, है ना? बिल्कुल बिल्कुल जैसे मेरे दिमाग में ये भी आया कि यार बहुत से लोग सोचेंगे कि यार नर्सिंग की बात हो रही है हम लड़के हैं हमारे लिए इट्स नॉट रेलेवेंट बट उस चीज को हटाने के लिए वो एक जो एक मतलब एक जेंडर डोमिनेंसी है कि हाँ भाई यार विमेन या फीमेल्स ही होनी चाहिए उस चीज को हटाने के लिए यहाँ पे लोग प्रमोट करते हैं कि यस जो बॉयज हैं जो मेन है दे शुड ऑल्सो इक्वली पार्टिसिपेटिंग इन दीज काइंड ऑफ फील्ड्स है इस चीज में ताकि उस चीज के लिए सो दैट्स अ गुड पॉइंट गाइस कि अगर आप सोच लो कि यस इफ यू आर इंटरेस्टेड विद ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग्स कि यार मनी अच्छी है पीआर मिल सकती है बट आई एम अ बॉय आई शुड नॉट बी डूइंग इट सो प्लीज उस चीज से आप अफेक्ट ना हो यहाँ पे आके यू विल बी वेरी सरप्राइज कि बहुत से लोग हैं मैं भी जानता हूँ जो लड़के हैं एंड दे डू नर्सिंग स्पेसिफिकली बिकॉज इट्स अ गुड पे रेट देयर इज ऑलवेज जॉब्स फॉर दैट सो थैंक्स फॉर क्लैरिफाइंग दैट बिकॉज ये चीज मुझे पता है कि बहुत लोगों के दिमाग में आती है हाँ जी सुरजीत ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ चीज मैं कहना चाहनी क्योंकि जब मैं ऑस्ट्रेलिया आई सी I finished my bachelor back home so I wasn't like 18 19 year old when I came ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ if you can do it do a nursing in India then you can come here to Australia it's really good because once you have done your nursing you get 7 in each in IELTS all you have to study 3 to 6 months here really you come on a prison visa you get only 3 to 6 months study and then you can get your permanent residency okay you can apply for that all right okay so that's a कोई वो नवी मतलब कोई डिफरेंट स्ट्रीम है मतलब क्योंकि बहुत से लोग हैं जो इंडिया में नर्सिंग करते हैं ठीक है वो नर्सिंग मतलब व्हाट यू आर सेइंग कि नर्सिंग वहीं पे कर लो इफ यू आर थिंक इट्स वेरी एक्सपेंसिव हियर इन ऑस्ट्रेलिया तो नर्सिंग आप वहीं पे करो एंड देन यहाँ पे कोई 3 और 6 मंथ्स का कोर्स आपने बताया yes bridging course yeah ओके अच्छा ब्रिजिंग कोर्स यू सेड yes ओके सो ब्रिजिंग कोर्स करो एंड देन आप यहाँ पे पीआर अप्लाई कर सकते हो डायरेक्टली आपको स्टडी करने की जरूरत नहीं ज्यादा हाँ जी ट्रू क्योंकि ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ you have to get 7 in each but still you have to get them when you study nursing or even I have to get them even though I'm a domestic student तो उस चीज के लिए जो वो ब्रिजिंग आपने बताया ब्रिजिंग कोर्स उसमें डू यू नीड सम एक्सपीरियंस एज वेल इंडिया में no I don't think you need experience okay but I think we just need to do a little more research but it's a very good option if I talk to anybody in India I always say please do nursing in India ओके सो गाइस अगर आप लोग ऑलरेडी मतलब इंडिया में नर्सिंग कर रहे हो तो आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है यू नीड टू रिसर्च मोर अबाउट इट बट देयर इज अ ऑप्शन कि एक ब्रिजिंग कोर्स करके है सो अगर आप वो करते हो यू कैन डायरेक्टली कम हियर फॉर पीआर रादर देन कि आप यहाँ पे भी आके स्टडी करो एंड वेस्ट योर मनी आई विल नॉट से वेस्ट बट अगर आपने ऑलरेडी इंडिया में कर लिया तो उसका एडवांटेज उठाया जाए रादर देन यहाँ पे आके भी आप स्टडी करो सो दैट्स अ रियली गुड पॉइंट यू नीड टू लुक मोर इनटू दैट ओके सो एक और चीज मेरे दिमाग में आती है कि मैं जैसे सपोज करो अगर इंडिया में कोई है उनका कोई मेडिकल बैकग्राउंड नहीं है राइट दे हैव नॉट डन एनीथिंग रिलेटेड टू मेडिकल या +1 +2 में लगा लो या नर्सिंग लगा लो कुछ भी नहीं है एंड दे आर इंटरेस्टेड क्या आपको पता है इसके बारे में कि कैन दे स्टिल कम हियर फॉर नर्सिंग बैचलर करने के लिए आ सकते हैं या वीजा में कोई प्रॉब्लम आती है if you have done your subjects in medical you'll get preference but if you haven't done it it doesn't mean that you can't get admission you can still get admission okay so अगर आपका मेडिकल बैकग्राउंड नहीं है बट यू आर लाइक you want to come here for nursing you still can apply ऐसा नहीं है कि आपका मेडिकल बैकग्राउंड ही होना चाहिए आपको +1 या +2 में मेडिकल नहीं है ओनली देन यू कैन कम you still have chances अगर आप interested हो you still can come okay next मेरा question था कि when you can start earning but like you said already कि after 6 months you do get placements and even you can start earning as well that's true even in aged care the job the which when you have 2 months off you can save at least half of your fees for the next semester are you serious yes with the night shifts okay so listen guys मतलब यही मेरा एक पर्पस था to call her because अगर आप नेट पे सर्च कर रहे हो या आपके एजेंट्स हैं they will not tell you these kind of things ठीक है someone who's been here for so long and who's already doing nursing she's doing it for a purpose she's been into aged care for 11 years she could have easily lived after
you know, achieve life. She's still well settled, but she's doing nursing for a reason. And like she said कि अगर आप वो 2 months आप job करते, you can save half of your next semester's fee. So that's a big statement. And you know, यही मेरा purpose था to call her, ताकि she can explain all these things, because ये वाली चीजें आपको कहीं नहीं मिलने वाली. Now, just one last thing I would ask, you know, if you could go back, like, you know, if you could go back in past, अभी आपको सारा experience हो गया. If I take you back to 2009, what would you change? What would you change? You know, anything you would like to, okay, you could have done this differently, that kind of thing, any regret kind of thing? Yes, I still regret quitting nursing. I should have done nursing because I know it was really hard financially. Yeah, but still I could have managed. Okay. Because the job, the option see job कर रही थी सारा कुछ see. I know it was really hard time for the first 3 years, but I know the friends who did nursing from 2009 with me, they're very well settled, very good earnings. They're on good. Not only you can't be only a nurse, you can have a lot of other opportunities to work. Yeah. Okay. So one of my friends, she works as a facility manager in aged care facility. Okay. So you can be a community nurse and all those things. So I regret leaving that too in that time. That thing, huh? So okay, but that's fine. You know, जो होना होता है जिस time पे वही होता है. And now you are doing, which is still good. Like, you know, you have taken that decision. Like I said, she's working, she is studying full time, she's a mom of 2, so it's not an easy thing, but she's still committed to that, which is really great. So guys, that's all for today. I hope बहुत से questions आपके answer हुए होंगे, बहुत सारे doubts clear हुए होंगे. And अगर आपके अभी भी कोई questions हैं which you want to ask, you can always leave comments down in the you know, comment section. And then अगर ज़्यादा comments आएंगे, ज़्यादा queries आएंगी, then we can arrange another like talk like this, so that, you know, we can answer more of your doubts. But for the time being, that's it. Thank you very much, Arababhi. Thank you very much for your time. I really appreciate that. I know it's very hard with kids and with your day-to-day life, but still you have given us so much time, so much valuable information, which is more important than anything else. So thank you very much for your time. Thank you. All right, guys. Thank you very much. And I'll see you guys in the next video. Till then, take care.